सब थोड़ा सेटल डाउन हो जाए, सब थोड़ा बैठ जाएं. बड़ा एक्शन पैक्ड इवनिंग है. दिस इज ऑलवेज द फन पार्ट ऑफ इट. थैंक यू सो मच, लाइक आई सेड, फॉर कमिंग. ये 2 साल के बाद पहले तालियां हो जाए. दिस इज वन ऑफ आवर मोस्ट आइकॉनिक शोज. बड़े सारे दोस्त ही हमारे, एंड आई नो दैट यू ऑल विल बी देयर. लेकिन आज फर्क पता है इतना है कि आप लोग भी इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं. तो मैं एक स्टार्टिंग में क्लू दे रहा हूं आप लोगों को. ये सारी जो चीजें सामने पड़ी हैं, इसको ध्यान से देख लेना, बिकॉज लेटर ऑन अ लॉट ऑफ इट विल बी यूज्ड विद यू ऑल. So that'll be the best part. Whether you all do it nicely or not, I don't know. But yeah. So my name is Salil, and today is one of those days जहाँ मेरा बचपन, मेरा present, मेरा future, ये पूरा show सामने है. I think we've all grown up with this show. We're all living the show right now, and we're all going to go into this show as well. So ladies and gentlemen, put your hands together for Infinix Smartphones MTV Roadies Journey in South Africa, co-powered by CoinSwitch, Pari Sanitary Pads, Leverage EDU, and LACME Sun Expert. It's a big day for us today because all the contestants are here. We've got a very big superstar, superhero who's actually become a bigger superhero in the last 2-3 years. And super excited to actually have him here. So, are we ready to start the evening, ladies and gentlemen? I know we're all got cameras in our hands, but can we have a big round of applause for everyone that's present here? Itna thanda nahi. One hand is enough. Nicely. I promise after this we'll not ask you to do it again. But you know, with MTV, I think they've been the forefront. जब भी कोई risk लेना होता है life में, when they need to make cutting edge programming, they need to move forward in life, a lot of them actually have the ideas, and MTV is always right up there. So that's why, ladies and gentlemen, today I would like to call on stage a gentleman who is going to make a very grand entry. But he's the business head, youth, music and English entertainment at Viacom 18. Anshul Alawadi is going to be joining us on stage right now in a very different way. Ladies and gentlemen, a big round of applause. There we go. Hi Anshul, how are you doing? Hi Salil, thanks so much for those kind words. You had a lot of people very busy taking pictures. By the way, that's a really cool entry. Are you a very avid biker as well? Yes, I enjoy motorcycling. One of those things I do to de-stress. Do you do this on every Sunday? Like, you know, you have those long biking rides with the biking group? I have a 3-year-old daughter at home, so I don't do every Sunday now, but I try and do whenever I can. I understand, sir. I've got a 4-year-old son and a 2-year-old daughter. Oh, so then no you're Sundays are out there. But you know, when I mention MTV is always cutting edge and it's always innovative, it's risk-taking. Yeah. It is that completely, you know. So, every time people talk about nayapan, they talk about new things. Roadies ko reinvent karna, बहुत बड़ी बात होती है. So, you know, big task on your hand. How did you all do it? No, Salil, very well put. So, for all of you who don't know, actually MTV started beaming in India in 1996. So we're actually a 26-year-old brand, right? Yeah. And I think the reason we've stayed where we are in terms of, you know, our pole position is because we've always reinvented ourselves. But इसमें रिस्क भी होता है ना. कई बार लोग सोचते हैं कि आजकल 15 मिनट जनरेशन है, 15 सेकंड जनरेशन है. हाँ जी. तो इसमें एक बड़ा रिस्क लेना मुनाफे में रहते हैं, फायदेमंद रहता है. हाउ डू यू ऑल कीप इट कि ठीक है चला, we'll go with it, we'll see how it goes? नहीं, to be very honest with you, Salil, I would love to say कि, you know, risk है तो इश्क है, we should do what we have to. But the truth of the matter is, a lot of thought and lot of analysis went into what it is that we need to do. अब हुआ ये कि हम ना हर 2 साल के दौरान एक बड़ी सी यूथ स्टडी करते हैं. 25,000 यंग लोगों के साथ हम बातचीत करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं. ऑफ कोर्स कोविड के दौरान हम ये कर नहीं पाए, बट वी डिड दिस रिसर्च एंड द रिसर्च इज वेरी क्लियर. इट सेड जस्ट वन थिंग: द वर्ल्ड हैज चेंज्ड. नाउ यू वुड वंडर व्हाई डू यू नीड टू डू रिसर्च टू नो दैट, but it helps sometimes. And then we figured that, you know, this is the right time for MTV to reboot itself. So we started in baby steps. We started with sports broadcasting, with La Liga, NBA, League One. We then went on to actually launch Fully Faltu, which is an interesting short-form video offering. We then launched Fully Faltu NFTs that, you know, thank God, have done phenomenally well. Our first drop was sold out in less than 48 hours. Wow. So we kept doing You all this. know NFTs, right? सब लोग जानते हैं NFT. This is exactly what is going to make sure MTV even triples its profits very soon. I hope so. Yeah. And then we figured that if we really need to reboot, then we take India's longest running adventure reality show, not very far from its roots. The roots are about journey and adventure, but we dialed that up 10x. And you know, honestly, Salil, I think it was from the heart that we wanted to make this. In our industry, I know ये अजीब चीज़ है कहना, मगर it's an industry where
हर हफ्ते रेटिंग्स आती हैं, कितने सब्स लिया आपने, कितने एक्टिव यूजर्स आए, कितने टिकट बिकी एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? बट वेरी रेयरली डू यू मेक कंटेंट दैट यू सी एंड यू से कि कुछ भी होना, दिस इज व्हाट वी वांटेड टू मेक. And I think credit to the full team at MTV. I have one of the best teams in the business. I'm not just saying it, I really mean it. No, I agree with that. Your work culture is fantastic. इसमें कोई दो राय है ही नहीं. And they've come up with Roadies the current season that's out there. And you know, it's like when you want to do something from the heart, things just work out for you. So I know when we were visualizing this concept, the name that we wanted to helm it was Sonu Sood. And we reached out to him and we said, आपको ये show करना है. And then, you know, it was a very interesting conversation because हम कुछ कहते थे and he would complete the sentence. So it was almost a matching of minds where we said, you know, this has to happen. And then we said, let's scale it up. And despite all odds and all sorts of risks that we have taken, many that we'll probably discuss some other time, the show is there. It's a phenomenal show, made from the heart. Very, very grateful to, you know, Pip Media. They're our partners who've actually helped us create this show. And, you know, it's also a politically incorrect thing to say, but we're in the business of art. Yeah. Now, in the business of art, you need patrons, right? Yeah. And very rarely do you get patrons who are patient with you and who say कि हमें आप पे भरोसा है, आप करो. And I think we're very grateful to all our sponsors, all of whom you mentioned. Yes. You know, and even the team at Infinix. I know Manoj and Aman are here, but thank you very much for having faith in us and for letting us do what we think needs to be done. So it's been a phenomenal journey. Lots of new things as well. आपने बड़े ऐसे, you just put it on the side over there, Sonu Sood. Ladies and gentlemen, as we all know, we are going to meet him. A big round of applause for a man who's done so much in the last couple of years. हम लोग उनको इतना प्यार करने लग गए, मेरे ख्याल से फिल्मों से तो प्यार था ही, लेकिन और भी बड़ा प्यार करने लगे. सोनू सूद इसमें एक नया एडिशन है. But the other part, of course, also is South Africa. Yes. आपने पूरा ये शो विदेश में शूट किया और वो भी इस टाइम में. ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क भी था. Again, hats off to the team, Salil. Yeah. You know, we thought of it, and trust me, it wasn't an easy experience, but the way they pulled it off was phenomenal. Right. And you know, for Sonu Sood, all I can say is there's no one better than a real world roadie to find and discover the next generation of roadies. And Big round of inspire applause, them. ladies and gentlemen. Yeah. I think ये तालियां बनती हैं इसके लिए. We're gonna have them on either side, and I'm gonna walk with you guys. Okay, are we going to keep the bikes on or off? One sec. There we go. All right. Okay, so yeah, congratulations. Well done, everybody. It looked fantastic. The locations in South Africa, we'll come to you all a little later. But kaisa raha, yaar? I mean, this is what everybody wants to do. I used to go to parties earlier and people say, I said, what do you do? I'm a roadie. सब ऐसे ही बोलते थे. तो यही तुम सबका भी सपना था ना, I'm a roadie बोलने के लिए. तो अब ये कर दिया, टास्क करने कितना मुश्किल, कितना इजी. let's have a परिचय first and then let's hear what you did in South Africa. Intro. Yeah, man, just one line intro. So, परिचय. Simple. Your परिचय. My परिचय. Yes, your introduction. तो hello guys, my name is Siddharth. You can call me Sid. यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं सिद्धू, Sid, Siri, and मनोज मेरा बाप का नाम है. Right. वो भी चलेगा, लेकिन हाँ, I'm a roadie. We're all roadies. Season 18. Yeah. Okay. So we were like going one by one like that. Oh, yeah, But yeah. it's all right. So, it's all right. We'll. And yeah, moving on. Okay. So let me just. Did you have like a tough time? मतलब normally roadies में देखते हैं task ना बड़े मुश्किल लगते हैं. इतने ही मुश्किल थे जितना सोचा था या नहीं? All right, hi, namaskar everyone. My name is Gaurav Alag, and I just want to say, Salil, you're right. बहुत लोगों के लिए ये सपना होता है. Right. And हम में से 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने ये सपना 2 बार जिया है. Yes. Right, A lot so of you all are from the previous season as well. So Absolutely. congratulations everyone So for making it back in. No, I think kudos to everyone, all 20 of us. I mean, I'd love to say that because इस बार challenge भी double था. Yeah. मजा भी double था. Yeah. Journey was insane. We were looking at South Africa, the weather, the tasks, the whole experience. I think it was just very different. I don't think यहाँ पे 10 ex roadies में से कोई भी एक ऐसा कि जो बोलेगा कि journey last time की तरह थी. बिल्कुल नहीं थी. I think well done. You read the entire press brief very well. बहुत बढ़िया काम किया. Absolutely. Well done. Now coming to this side as well. I do my homework well, Salil. You did a brilliant job. Big round of applause for everybody here also. And coming to the light ना बहुत shade में हो आप लोग. So anyone, we just a quick bit here and there. What's your name and how was it, man? क्या बोलती पब्लिक?
फुल पावर था, मचाया है रोडीज के जर्नी पे. I think Yeah. it was one of the most beautiful experience we all have had. Yeah. So my name is Tanish and I'm from Amchi, Mumbai. All right, Tanish, hold it there. You had a great experience. We'll come back to all of you all, but we got a man जिन्होंने आपके लिए experience और भी better बनाया. So we all know who we're talking about, right? Do we know who we're talking about? The real superstar of India. I've come to love him for much more in the last 2 years. I know everyone does too. So ladies and gentlemen, put your hands together for the one and only, the hero, the big boss man, Sonu Sood. How are you, sir? Man, जबरदस्त, mind blowing. Oh, आपसे मिलके इतना अच्छा लगता है. क्यों ऐसा लगता है कि all the time you are super ready, you are super fit. Love the shoes also, sir. कमाल के ये जूता का शॉट लो यार. Wow, love it. Thank you, man. सोनू सर, कुछ ऐसे स्वीट बच्चे आपके सामने, कुछ सख्त बच्चे आपके सामने, कुछ नटखट, कुछ शायद नॉट सो नटखट. कैसा रहा एक्सपीरियंस सर सबके साथ में? ये साउंड दे रहे दोस्त, आ रही है बात? थोड़ा और साउंड. या ओके. तो मैं यही कहना चाहूंगा, ये बच्चे नहीं है, हीरोज हैं बॉस. इन्होंने जो 45 डेज में किया है, आई थिंक दे इंस्पायर मी, दे विल इंस्पायर द होल नेशन. दे आर द रियल रॉक स्टार्स एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू सो मच. सोनू सर, ये टास्क्स वाले जो सिचुएशन होते हैं जी, डरा देते हैं लोगों को. जब मैं फेसबुक पर मीम्स भी देख रहा होता हूं या फिर फेसबुक पर ये भी देख रहा हूं तो कैसे करते हैं. आप जब इनसे करवा रहे थे, was the feeling similar to you also? यार ये तो बड़ा मुश्किल है. हर रोज हमें लगता था कि बड़ा मुश्किल है बहुत, लेकिन इन लोगों ने उसको आसान बना दिया. मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ. एक जो पूरी दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है बंजी जंपिंग के लिए, 216 मीटर का, 216 मीटर्स का. और मुझे तो सिर्फ होस्ट करना था, मुझे कूदना नहीं था. मुझे तो होस्ट करना, हाँ यार अच्छा है, वेरी गुड, अब रुकना नहीं, कूद जाओ, ये सब. तो सब लोग कूद रहे थे, बड़े थे. तो मैं क्या यार कूद जाऊँ क्या, मैं कूदूँ कि नहीं कूदूँ यार, काम तो नहीं है मेरा कूदना. पर आई थिंक इन लोगों ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं क्या यार बॉस, मैं भी कूदता हूँ. और मैंने भी वहाँ से जंप लगाया. सो आई थिंक दैट मेक्स देम रोडीज, दैट मेक्स millions of people across the nation that they want to be part of these roadies. I think they are the real inspiration. सर हम सब ने तो बचपन से ही देखा है, क्योंकि जैसे कि अंशुल सर भी बता रहे थे, इट्स पार्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड ऑल्सो. आप भी हमारी उम्र के ही हैं, आपने भी बचपन से देखे थे. उस समय आप देखते थे और कैसा लगता था. नाउ यू नो ऑल ऑफ देम आर नाउ पार्ट ऑफ योर नेट, आपके सेफ्टी नेट के अंदर थे. सो व्हेन दे फर्स्ट कॉल्ड यू एंड दे सेड चलो सोनू सर आपके साथ करना हमें, पहले इंस्टेंटली स्क्रिप्ट की तरह यस या फिर थोड़ा टाइम लगाया? नहीं बिल्कुल एकदम वी आर ऑल ऑन आवर टोज. मुझे भी एकदम रोडी टाइप की फीलिंग आ रही थी. पहले तो हम लोग टीवी पे देखते थे, इंस्पायर होते थे, और मुझे लगता है कि देश का हर बंदा चाहता है कि मैं रोडीज का हिस्सा बनूं, क्योंकि मुश्किलों से आपको गुजरना पड़ता है. कई बार सोने की सही जगह में नहीं मिलेगी, कई बार लंबा ट्रैवल करना पड़ेगा, कई बार खाने का कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यू हैव टू सर्वाइव. और उस सर्वाइवल के अंदर आपको वो सब टास्क करने हैं जो बहुत ही मुश्किल हैं और बहुत एक्साइटिंग है. बट आई थिंक जब वो कर पाते हैं तो वो रोडीज होते हैं, और जो करना चाहते हैं वो अगले सीजन का इंतजार करते हैं कि बॉस कब मौका मिलेगा और कब मेरा नंबर आएगा. आपके साथ कोई भी डिस्कशन फिटनेस के बिना हो ही नहीं सकती सर. आप ये जो टास्क और डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, मैं एक किस्सा सुनाना चाहूंगा. जब रेडियो में मैं शो कर रहा था और दबंग के बाद मैंने अगले दिन आई कॉल्ड सोनू सर सुबह 6 बजे. दबंग फ्राइडे को रिलीज हुआ, सुबह 6 बजे भी कॉल्ड सोनू सर एंड ही वाज इन द जिम. मैं कहा सर कल तो पिक्चर रिलीज हुई है. कहते हैं हाँ बट नाउ आई एम इन द जिम, विल चैट इन सम टाइम आल्सो. आपका डिसिप्लिन इसके लिए वैसे तालियां हो जाए, बिकॉज दिस मैन इज ए प्रतीक ऑफ एग्जैक्टली हाउ यू शुड ऑलवेज बी. तो ऐसे कुछ ज्ञान दिया आपने कई बार इनको, बिकॉज बहुत जरूरी हो जाता है. लोग हार मान जाते हैं. समवन लाइक यू नेवर लेट्स गो. पिछले 2 साल में तो बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड है हाउ यू नेवर लेट गो. व्हाट वाज एडवाइस दैट यू गिव देम कि कैसे हार नहीं माननी है? देखो ये सब लोग ज्ञानी हैं वैसे ही, मैं क्या ज्ञान दूंगा इन लोगों को. लेकिन मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी विच आई थिंक द होल नेशन विल सी, कि
जो बदलाव आता है एक्सपीरियंस से, हर रोज़ जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, जो उससे चेंज आता है आपकी लाइफ में, वो बड़ा एक्सपीरियंस कमाल का होता है और वो आप लोग महसूस करते हैं। आई एम श्योर सब लोगों ने वो देखा है खुद के अंदर, और मैंने इनके अंदर देखा। आई स्टिल रिमेंबर जो मैं फर्स्ट एपिसोड जब हम लोग शूट कर रहे थे रोडीज़ का, तो सब अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते थे। उनका एक बोलने का तरीका था, रिएक्ट करने का, हर चीज़ अलग था। और जब आखिरी हमने पूरा सीज़न ख़त्म किया, मुझे लगता है कि अलग लोग बनकर निकले। That's true. That always happens. Big round of applause for yourselves also. शुरुआत में ऐसे आते हैं जैसे boot camp होता है ना. You come in like think I'm going to take over the world, and then you realize halfway कि भाई the world is very large. तब छोटा ही से हम लोग कर ले. But the toughest thing that you found about being a host also, sir. इनकी तकलीफों के बारे में तो बात करेंगे ही, but आपके लिए कुछ मुश्किल था? मुझे एलिमिनेशन वाले दिन बड़ा डर लगता था यार। इन लोगों को तो डर लगता था, लेकिन मुझे और इसलिए टेंशन आता था मैं कि यार ये ना जाए यार, रोक लूँ मैं इनको यार। बड़ी कोशिश करता था मैं कि कुछ ऐसा फॉर्मेट बना दें यार, ये ना जाए। आई थिंक दैट्स व्हाट वाज अ डिफिकल्ट पार्ट, बट वो भी एक सच्चाई है। बोलते हैं कि हमें ज़िंदगी में बहुत बार एलिमिनेशन मिलते हैं, हम लोग ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं और फिर कुछ ऐसी मुश्किल चीज़ें आती हैं कि हम लोग लाइफ की उस रेस से थोड़े समय के लिए एलिमिनेट होते हैं, और फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि वापस जो ज़िंदगी है रोड पर लेकर आनी है। सबने देखा है एज एक्टर्स, हमने आपने सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि कई बार पटरी से गाड़ी उतरती है और हम लोग मेहनत करके वापस पटरी पर लेकर आते हैं। रोडीज़ भी वही है कि जब कई बार एलिमिनेट होते हैं तो आपको लगता है यार कुछ कमी रह गई है, बॉस वापस मेहनत करूँगा, और फिर वापस आप आते हो या फिर इंतज़ार करते हो कब आने। आई थिंक वो एक रोडीज़ सिर्फ एक शो नहीं है, एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा लेसन है। True. एक तजुर्बा है कि आप देखते हैं कि बॉस किन मुश्किल तरीकों से हम लोग निकलते। जब हम लोग कॉलेज में थे हमने सब एक्सपीरियंस किया, और आज जब हम वो पूरा डॉक्यूमेंटेड देखते हैं और इतनी बड़ी लंबी जर्नी देखते हैं। मुझे आई रिमेंबर कि वी स्टार्टेड फ्रॉम पोर्ट एलिजाबेथ साउथ अफ्रीका के कोने से शुरू किया, केप टाउन तक हम लोग गए। पूरी जो जर्नी थी वो इतनी कमाल की थी कि मुझे फिल्में बहुत शूट की, आउटडोर्स भी बहुत किए, बट आई कैन वाउच कि रोडीज़ का जो एक्सपीरियंस था वो सबसे कमाल था। एंड ऑल थैंक्स टू दीज गाइस आल्सो। Wow, give yourselves a round of applause. सोनू सर का इमोशनल साइड भी हम देखेंगे जब आएंगे वो एलिमिनेशंस पर, जब हम देखेंगे। लेकिन आई एम गिविंग यू ऑल अ चांस आल्सो। चलो हम तो आपसे सवाल करते हैं, बट वन क्वेश्चन दैट यू ऑल वुड लाइक टू आस्क सोनू सर, यू ऑल हैव मेट हिम ड्यूरिंग द एंटायर बिट। एक सवाल। यस गो अहेड। I would like to ask Sonu sir, who is your favorite contestant? वाह। सर ये मैं बताता हूँ। मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट जो हमारे डायरेक्टर अंकित थे वो है। हमारे डायरेक्टर मुझे बहुत जल्दी बुलाते थे, आजा बॉस रेडी है, कैमरा रोलिंग है, मैं बैठा हूँ आप भी आएगा। अभी अंकित किधर है, दिख रहा है कहीं पे? आई थिंक यहीं पे है हमारे डायरेक्टर साहब भी। हाय अंकित, क्या हाल है? सो वो है मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट, और मुझे लगता है आप लोगों का भी वही है ना। ये देखो सोन, देखा क्या जवाब दिया है? ये देखो 400 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ना ऐसे जवाब रेडी हो रहते हैं। आप लोग के जो सवाल होते हैं बड़े सिंपल थे। बट फनेस्ट मोमेंट फॉर यू सर, मुश्किल मोमेंट्स तो थे जैसे आपने बताया अबाउट जंपिंग, पर ऐसे फन वाले मोमेंट्स भी थे ना, कॉमेडिक मोमेंट्स जो इनके साथ रहे। डू यू रिमेंबर एनी वन ऑफ देम? वी वुड लव टू हियर। बहुत सारे थे। मुझे याद है कि कई बार बिल्डअप बड़ा होता था कि आज का जो टास्क है इतना मुश्किल है, अगर कुछ हो जाएगा, लेट जाना, बहुत ज़्यादा हमला हो सकता है। लेकिन हमारा जो है ना एक लेकिन बहुत है कि यार सब कुछ हो जाएगा, आप खाइए पिए ये कीजिए ऐश कीजिए, लेकिन ट्विस्ट, लेकिन उसके अंदर एक कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। उस लेकिन में कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। सो आई थिंक उस लेकिन में जब लोग ये शो देखना शुरू करेंगे वो भी कहीं ना कहीं ये बोलेंगे जरूर कि जिंदगी बड़ी कमाल की है। लेकिन आई लाइक इट। ऐसे ट्विस्ट हमारे साथ भी आज बहुत सारे होने वाले हैं। I wanted to know if the Roadies content is going to be differentiated between MTV viewers and for viewers in Vote Select. Yeah, it's a good question. We will have, firstly, all the Roadies content will be on Voot fully. But we will have some interesting snippets that you will see, which is over and above what we've already put on television, which is fun for our digital, digital fans as well. Are you, an extension to this question, are you going to premiere this first on Vote Select? Of course, yes. That's the proposition we'll maintain. That's the idea. Thank you. Ready, next question please. Hi.
Sonu sir, this side Vishakha, left side towards this side. All right. Yeah. Hi, Vishaka. Right. Yes, Vishakha from Peli Chakkar. Just a quick thing that Roadies में पहली बार host कर रहे हैं. I'm sure you have your sets of expectations कि fans कैसा लेने वाले हैं. But अगर आप किसी Bollywood कलाकारों को Roadies में अगर ला सकते, if you would have given a chance, तो कौन से 3 ऐसे वो होते हैं जिनको आप Roadies का हिस्सा बनते हुए देखना चाहेंगे? I would say Shahrukh, Akshay, and maybe Salman. Thank you. Perfect Trimurti. Right at the top. वो सोने नहीं देंगे रोडीज. Next question, please. Yes, sir, on the left. Sonu sir, left way. Yes. Can we have the mic here, please? Idhar. Yes, just 1 second. Hi, Yes. Sonu. Hi. My name is Pooja Saman. Hi, Pooja. How are you I doing? really appreciate and congratulate for doing this show. We are keep on seeing in films and all social commitment work. But what is the 2 main reasons that you have been associated with this show? And my second question is that, what is the biggest stunt that you have done in your real life that you really faced it off and came out of that? Thank you so much for the question, Pooja. I would say I've always been a fan of roadies. You know, we've grown up in our college days. We used to see that. And today, when I'm a part of this brilliant show, there's a huge amount of responsibility on my shoulders that I have to live up to the expectations that the audience have. But I must admit, the contestants, the whole format of the show, the kind of scale that we got to shoot the show, thanks to Anshul, MTV, the whole team. It's phenomenal. It's a journey not only for the roadies, but for the host and every single individual who was there on the set. And I'm sure the way we enjoyed shooting it, people are going to enjoy more watching that. So really looking forward to that. And your second question is the biggest stunt, if I would say, in real life that I did was, I don't know, been doing a lot of stunts from past 2 years when the whole COVID thing started. But like I said, in whatever I was doing, so there was no lights, no camera, only action, and somewhere Almighty was the director who was directing the whole thing. And I'm glad that I was a chosen one to do my bit. Yeah, still miles to go, but the journey is on, and I promise you that I'll try to live up to the expectations that people have. Thank you. For the rest of the stunts, you can follow Sonu sir on Instagram. उसमें ही जो आप लोग देख लेते हो ना, it's unbelievable in that. Yeah. Next question, please. Yeah, right there. Yes. In the straight up, sir. Straight. Great, sir. Yeah, Sonu ji, I'm Vandana from Film India. I wanted to know that in this show, there are lots of stunts. So, but which you also felt was quite challenging for you also for the. So, what was that? Which stunt was there, which was challenging for you also? Like you are a stunt master, and like, so which you thought was the most challenging stunt? Every day was a new experience, Vandana. But I would say one of the most challenging one was the bungee jumping. It was on the highest bridge in the world. It was 216 meters, and there was no end to the ground when we actually stand there and doing the bungee jump. When we jumped from that bridge, so that was a life-changing experience. And I would say when people will watch that, they will get inclined towards going back to South Africa and try that stunt that we did. But yeah, it was phenomenal. Thank you. That's almost 750 feet. That's crazy. और bungee jump में सर पहली बार कूदते तो ठीक है, जब recoil आता है तो बड़ा मेरा हाथ जल गया था एक बार. So I tried to hold the rope also. That recoil is the really tough one. All right, next. We can take a couple of questions more. Yes, please. Hi, this is Nehal from Ad Gali. My question is for you, Anshul sir. What was the main reason for taking roadies to South Africa? Right, it's a good question, honestly. See, a lot of our research showed that for a lot of the scale that we wanted in the show, South Africa was the right sort of destination, right, in terms of the stunts, etc. And the team was very passionate कि हम बनाएंगे तो इसको यहाँ पर बनाएंगे. And of course, we had Sonu ji's blessings as well. So that led to South Africa. Thank you. Right, we'll take one more question.
One Hi, last, Sonu. yeah. Sana here from Indian Express. Of course, as you rightly mentioned, while growing up, everyone has the dream कि मैं रोडी बनना चाहता हूँ. But मैं रोडी का host बनना चाहता हूँ. I'm sure that was not the plan. While you are a worldwide hero now, you are well stepping into big shoes of Ranvijay. What was the kind of pressure that you were facing when you took the show up, and how has been your experience? You know, the magical thing about roadies is that you have to be real, what you are. In fact, all for all the contestants also. So when I reached the sets on the very first day, I remember it was almost 2 a.m. In the midnight, and the way I connected, I said, you know, I have to be their friend. I have to be a roadie myself, and I have to just experience what they are experiencing, you know, during the whole event. And believe you me, the whole 45 days that we had spent in South Africa, you know, every single day was a learning experience, and we lived our lives the way we always wanted during our college days. And I think that, you know, it was one of the most special experience of my life also last 18, 20 years. You know, we have done so many movies, we have traveled across the globe, we have done best of stunts, but this was the most special one. But no pressure. No pressure at all, of course not. And Anshul, of course, at the start of the launch, you spoke about how you had this karmic connection with Sonu. But what was about Sonu? Was the image that he has among the youth today? Or did you want the audience's perception to change towards roadies? And also, I want you to tell us what different will we get to see in roadies this year? Right. So for what's different, I'll take your last question first. Everything is. But the DNA of the show is the same. So it's adventure, it's journey, but everything else is different. And you should watch the show and you'll realize what I'm saying. As far as Sonu's concerned, I said this in the beginning as well. See, there is no better than him, than a real world roadie to inspire a next generation of roadies. All of us, right, look up to him for what he's achieved. He's a first generation creative, you know, superstar in this country. Outside of that, in his other avatar, what he's done is something that inspires us and an entire generation. And so it was obviously a very, honestly, it was more natural than anything else. There was no other sort of, it wasn't even a thought, frankly, you know. And I must say one thing, you know, that I said this in the beginning, I'm repeating myself, but when some things have to happen, like-minded people get onto the journey and we move forward. And this is exactly what is. And, you know, I would like to just add to, you know, what Anshul Bhai was saying. You know, we were shooting in a place called Congo Caves in South Africa. And the caterers, the local caterers who were giving food, his name was Yogesh. I remember कि योगेश came to me, he said कि भाई मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो ये आपका सारा खाना बना रहा है, वो बंदा उत्तराखंड से है और उसके भाई को और उसकी फैमिली को आपने बचाया था लॉकडाउन में और घर भेजा था और वो स्पेशली आप लोगों के लिए खाना स्पेशल बनाता है and he wanted big to round come of on the applause, set. ladies and gentlemen. Can never thank him enough for what he's done. And he wanted to come on the set. So जब मैं उससे मिला तो you know he had tears in his eyes कि भाई आप हम लोग यहाँ थे और आपने मेरे भाई को बचाया था. मैं रोज़ जब खाना बनाता हूँ, मैंने बड़े शोज़ यहाँ पर किए हैं, बहुत खाना बनाया है, पर जब मैं आप लोगों का खाना बनाता हूँ, मैं कुछ अलग इमोशन के साथ बनाता हूँ. I think that was very special that we experienced there. Wonderful. Thank you, guys. Just before I call all the contestants on stage, मैं एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा. सर, आपको गुस्सा आया था कि 40 दिनों में कभी भी? वो आप कंटेस्टेंट से पूछना जब अभी आएंगे वो लोग. So they'll answer better. कभी देखा नहीं इनको क्रोधित होते हुए. But can I have all the contestants on stage for one last big photo op? Can I have everyone on stage, all the contestants, and can we have somebody remove these chairs, please?